find the movement of inertia of a ring. This is movement of inertia of a ring. Okay, अब हम एक रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं कि ये रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इससे पहले जब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने क्या किया था कि हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, और वहाँ से हमने देखा था कि द रोल ऑफ मास इज प्लेड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहाँ भी हम वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं। आप कंसिडर करिए, लेट अस कंसिडर लेट अस कंसिडर ए रिंग। हम एक रिंग कंसिडर करते हैं, रिंग ऑफ रेडियस। उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, एंड हैविंग मास कैपिटल एम। ओके, and this ring is rotating around the central axis. Okay, rotating in its own plane around its center. It is rotating in its own plane around center. Okay, you can see here with constant angular velocity. इस तरीके से आपको सवाल का जवाब देना होता है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, and each element of the ring is at a distance r from the axis. Each element of the ring, इसका हर पार्ट जो है, each element of the ring is at a distance. ओके, अब डायग्राम में देख लीजिए, उसका हर एलिमेंट जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। जो रिंग जो है वो छोटे छोटे मासेस से बना हुआ है, जिसका जोड़ करने के बाद इसका मास कैपिटल एम हो जाएगा। सो एवरी पार्ट ऑफ द रिंग, एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, आर फ्रॉम द okay, r from the center. So and moves with the speed r omega. We know that. अब यहाँ से करते हैं हम, we know that v is equal to r omega. So जो वेलोसिटी हो जाएगी वो r into angular velocity हो जाएगी, because r and omega are perpendicular to one another. So it is just r omega, unless v is equal to r cross omega होता है ना. So we have unless basic expression हमारा होगा v is equal to r cross omega. So you can write it as it is r omega sin theta. Okay, so here theta is 90 degree. The angle between r and omega, you can see here, this is 90 degrees. So you are left with b is equal to r omega. This is equation number 1, right? So the kinetic energy is therefore, the kinetic energy is k is therefore, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू 1/2 mv²। यही होता है, इसको आप लिख दें 1/2 m, और वेलोसिटी की जगह आप लिख सकते हैं r omega whole square. So you are left with kinetic energy is equal to 1/2 m r square and omega square. Okay, so now see here, compare it with this kinetic energy of the linear motion.
So velocity is replaced by omega, then mass is replaced by moment of inertia. So you can write this kinetic energy of a rotating body is equal to 1 by 2 I omega square. Okay. So here I is equal to mr square. So therefore moment of inertia of a ring is equal to mr square. So this is all about this moment of inertia of a ring. Thank you. Inertia of a rigid rod. Okay. So इसको हम करने की कोशिश करते हैं. देखिए, let us consider a rod. Let us consider a rod of mass m. Okay, consider a rod of mass m and L be the length of the rod rotating about rotating in its plane about an axis at a distance L by 2 from either mass, from either end हम कह सकते हैं. Okay, so we know that. अब हम आगे चलते हैं. we know that movement of inertia of a body is equal to summation of mi ri square. So now here you have two masses, then the movement of inertia you can write it now like this. इसको आप expand कर दीजिए. This is m1 r1 square plus m2 r2 square. So in place of m1 you have here m1 is equal to m by 2 and r1 is equal to L by 2 and m2 is also m by 2, you can see in the figure, and r2 is also L by 2. So from equation number, this is equation number 1 and this is equation number 2. Now using in equation number 2, using in equation 2 we have I is equal to m by 2. This is mass m bin is m by 2 and r1 is L by 2 whole square plus यहाँ देखिए m2 is m by 2 and r2 is L by 2 whole square. Okay, so this is I moment of inertia of this rigid rod is, now m by 2 can be taken outside. You are left with L square by 4 plus L square by 4. So I is equal to m by 2 into 2L square by 4. उनके साथ 2 cancel हो जाएगा. You are left with m by 1 by 4. This is ml square. So the moment of inertia of a rigid rod about the central axis, this is 1 by 4 ml square, right?
So this is all about the movement of inertia of a rigid rod. Thank you.